एंड फर्स्ट आप जो है लेट जाएंगे मकर आसन में, क्योंकि हमारे बैक आसन है मैक्सिमम आज और वो इधर साइड से ही रहेगा, तो आप मकर आसन में लेट जाएंगे थोड़ा। तो उसके लिए ऑन योर बेली, योर बिग टोज टचिंग एंड यू मेक अ पिलो विद योर हैंड्स, रेस्टिंग योर head on the hand and your cheek might touch the floor. And from here, you just have to straighten your legs. We will be doing ardha shalabhasan. तो उसके लिए आप अपने जो है पैर सीधे करेंगे। आप अपने हाथों को अब अलग अलग तरीकों से रख सकते हैं। They will be by the side of your legs. Now you can keep them inside. इस तरीके से आप अंदर रख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी जो है अंदर सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके लिए क्या सही रहेगा। ट्राई टू कीप साइड, जो आपके एल्बोज है वो दिखने नहीं चाहिए, इस तरीके से आप रखेंगे। जब आपने इस तरीके से अपनी बॉडी पोस्चर बना ली है, अर्ध शलभासन के लिए आपको अपने लेग्स जो है लिफ्ट करने होंगे। तो जब आप ऑल्टरनेटिवली लेग लिफ्ट करेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे 10 टाइम्स करें, बट जो हमारा फर्स्ट राउंड रहेगा उसको हम होल्ड करेंगे। तो हम इसे डायनामिक बना रहे हैं, मूवमेंट के साथ बना रहे हैं। वो जो पहला रहेगा वो हमारा होल्ड जो है रहेगा। तो आप एक एक बार जो है एक एक ऑल्टरनेटिव पैर उठाएंगे एंड यू विल होल्ड, breathe and lift your right leg up and hold and keep breathing. Make sure it goes straight up. ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, टेढ़ा नहीं, सीधा, and keep breathing. And exhale and release. Similarly, we will do with the left leg. We will inhale and lift. So inhale and lift the left leg up. Hold it there. And exhale and release. Very nice. Now let's do it another 8 times. So right leg up and down. Left leg up and down. So धनुरासन, उसके लिए आप सबसे पहले जो है अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं and then you can just release your hands. For ease you can keep it wherever. Now so what happens, आप अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ेंगे and you will be holding your ankles like this. For beginners this would work. You hold it like this and then you will be lifting your front body and you will try to lift your legs as well. So first let's do it together. अभी आपको बहुत अपने legs को उठाने की जरूरत नहीं है. You can only try to lift your upper body, and while you do this, make sure that you are inhaling deeply and then holding the pose will be inhaling and exhaling both. So कहीं भी आपकी breath ना रुके, we will make sure that our breath is continuous. So now inhale and lift your upper body and keep breathing. So if you want, you can lift your legs also, but for now, first round, just this. Now exhale and come back. Now for this another round, now you will try to lift your legs and your upper body both together. So here, holding your hands, holding your ankles with your hands, and inhale and lift your whole body up. Keep breathing.
And you can come down, release, relax.